So the word is honor, सम्मान, right? इसको मुंह खोल कर बोलते हैं honor, right? But another word is owner, 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 right? ये वर्ड कहां से आया है? ओनर मीन्स मालिक, जो ओन करता है, जिसका मालिकाना हक होता है. तो वर्ड केम फ्रॉम ओन, द पर्सन हु ओन्स समथिंग कॉल्ड ओनर, ओनर, राइट? एंड ऑनर, they are not homophones, right? So you need to be little careful. Honor, सम्मान, and owner. Honorable प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो ओनरेबल बिल्कुल नहीं होता है, राइट? सो रिमेंबर ऑल दिस. नेक्स्ट वन. हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट? सो आई प्रे टू गॉड that you would be. We are still somewhere wishing. विश करते हैं, कोई चीज की इच्छा करते हैं. जब वो विश करते हैं तो वुड ही लगाते हैं. सो द सेंटेंस इज दैट यू वुड बी सिलेक्टेड. व्हेन यू विश, आई विश, आई विश तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी. आई विश you would get this job. You would get that job. Yes. Get है this. ना? मैं मुझे आई विश, मैं तुम्हारे लिए, आई विश मीन्स मैं ऐसा भगवान से मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ. प्रे टू गॉड को आई विश भी कह सकते हैं, विश भगवान से की जाती है वैसे इस केस में. सो आई विश, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या मैं ऐसा मांगता हूँ कि तुम जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाओ. तो वहां वुड लगता है फॉर इमेजिनेशन एंड विशिंग इमेजिनेशन. I wish you would score well. और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जब हमें लगे कि ट्रांसलेट कर सकते हैं. यस वी कैन. यू वुड पास द एग्जाम with a good score. You can translate as I did. If you like, आप शॉर्ट सेंटेंस बिना ट्रांसलेशन के सेम मीनिंग के साथ भी फॉर्म कर सकते हो. आई विश यू वुड स्कोर वेल. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मैं ऐसा ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, भगवान से मांगता हूँ कि तुम अच्छे स्कोर से पास हो जाओ. और आई विश यू वुड पास द एग्जाम विद अ गुड स्कोर. जैसा बोल रहे हैं वैसा ही ट्रांसलेट कर देंगे. ठीक है? अरे बहुत थैंक यू यार, थैंक यू. लाइक थैंक यू फॉर योर प्रेयर, थैंक यू फॉर सेइंग दिस. इतने सारे वर्ड्स बोलते हैं हम, थैंक यू भी बोल देते हैं, बट ओरिजिनली वी शुड से थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. काइंड वर्ड्स मीन्स जो आपके यहाँ पे काइंड का मतलब दयालु ना होकर आपके जो प्रार्थना भरे शब्द हैं उससे है. The humble words you said, right? So the kind words. These expressions are very wonderful. When you use them, you sound very, very, polished speaker, groomed speaker. People would like to listen to you because they get good vocabulary and sentences from you, right? That's why many English, people or the persons who are very much interested in English listen to Shashi Tharoor. There's a reason behind it, because people want to know other words which are not even given in the dictionary sometimes. Correct? And about Shashi Tharoor, why I'm talking about him? Because he really talks very nice English, being an Indian, right? Yes, So Margaret. he is very kind of a good example for all of us who are into English field and want to speak English wonderfully. हम लोग उनको फॉलो कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपका लेवल क्या है, बट आप तो इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, कैन फॉलो हिम. And it is said about him, like once he was speaking in British Parliament, right? And he was speaking in British Parliament, and you won't believe, when he was giving his speech there, he was
People were sitting with the dictionary also because many of his words are not understood in general also. So this is what his level is, right? तो आप ऐसे कई लोगों को सुन सकते हैं, you get nice idea of speaking words also, right? चलो next is, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? Do you have any kids? See, it is very uncommon, or you should not ask na that do you have son or daughter. पहले पूछो उसके बच्चे हैं, फिर पूछो son है कि daughter है, right? Do you Okay, have ma'am. do you have kids, right? Do you have kids? If he says, if she says yes I have, then ask son or daughter. Short. लेकिन पहले पूछ लेंगे तो ऐसा हमने तो कंफर्म ही नहीं किया, है ना? तो फर्स्ट वी कंफर्म। जब बोलना हो ढाई ढाई साल की है, whenever you say 2 or 1.5, तो बोलेंगे years. Do not say year. Do not say year, क्योंकि अब यहाँ पे बात हो रही है एक से ज्यादा घंटे की. 1.30, that means 1 hour 30 minutes. That means 1.5. 1.5 is also plural. एक से ज्यादा तो प्लूरल होता है ना, तो डेढ़ भी प्लूरल है. करेक्ट, राइट? सेम विद ढाई ऑल्सो, दो ऑल्सो. तो ध्यान रखना है, जब आप एक से कोई ज्यादा नंबर बोलते हैं तो उसके बाद आने वाला अब वो 1.5 भी हो सकता है, राइट? तो ईयर्स होगा यहाँ पे. इट कुड ऑल्सो बी 2.5 ईयर्स, बट हाफ एंड उसके पहले वाले नंबर के साथ देयर शुड बी ईयर्स, राइट? ऐसे एक और कॉन्सेप्ट है, जस्ट अंडरस्टैंड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू. मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड. No, always say one of my friends. देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक. एक मतलब वन. ऑफ माय फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स, राइट? मेरे दोस्तों Yes, में ma'am. से एक दोस्त. ऐसे ही बोलते ना, मेरा एक दोस्त है जो अच्छी इंग्लिश बोलता है. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, राइट, स्पीक्स गुड इंग्लिश. स्पीक्स क्यों लगा सिंगुलर के साथ? ऐसी एस लगता है. लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है ना, वो हमेशा प्लूरल ही आता है. ठीक है, क्लियर? चलो, वन ऑफ माय, वन ऑफ कंट्रीज, वन ऑफ द सिटीज, ये सब प्लूरल आएंगे. नेक्स्ट. हाँ, वह आंगनबाड़ी जाती है. शी गोज टू आंगनबाड़ी. So it is a play school for children basically in such areas. She goes to Anganwadi. Next. ठीक है. um, मैं आशा करता हूँ या मुझे लगता है तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे. मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, है ना? आई विश यू वुड सॉल्व माई प्रॉब्लम. खुशबू मैम, आई विश यू वुड सॉल्व माई प्रॉब्लम, ऐसा पवन बोल रहे थे कल, राइट? तो ऐसा होगा वो. यू वुड, वो फिर से आई विश वाला आ गया, है ना? प्रे कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हम भगवान से ही कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट शुड बी इन वुड. हाँ. I don't face problem with other subjects. I only face problem in speaking. Otherwise, other subjects are good. तो मैं कोई प्रॉब्लम Yes. फेस नहीं करता हूँ. I don't face any problem. We face the problem, guys. I don't face any problem. प्रॉब्लम के पहले हमेशा फेस लगेगा. फेस को प्रॉब्लम और चैलेंज दोनों हो सकता है. प्रॉब्लम विद अदर सब्जेक्ट्स. ओके, फेस चैलेंजेस भी होता है. 1 ईयर, ओके, 1 ईयर. वन मतलब एक, राइट? लेकिन जब बोलते हैं 2 ईयर्स तो गलत है. 2 ईयर्स होना चाहिए, 2 ईयर नहीं होगा, एस लगेगा. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. कोई इंग्लिश में बोलते हैं कम वॉट में, कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, और इट्स अ फुल सेंटेंस. कुछ भी हो जाए, कम वॉट में
I would learn English. मैं तो इंग्लिश सीख के ही रहूंगा और सीख ही जाऊंगा, सीखूंगा ही, like this. कम वॉट में कुछ भी हो जाए. अरे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. टाइम, आपसे बात करने वाला टाइम था वो बहुत मजेदार था. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. इट्स बीन अ ग्रेट टाइम. इट हैज बीन. It has been is also called it's been. It's been. It's been. It means it has को short में it has को भी it's कहते हैं. It is को तो कहते ही हैं, it has को भी कहते हैं, लेकिन it has के बाद been लगता है. It has been a great time. आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, टू नहीं लगाएंगे. टॉकिंग टू यू. टॉक भी नहीं लगाएंगे. ठीक. टॉकिंग टू यू. टू नहीं लगाना है. अगर टू नहीं लगाना है तो टॉकिंग लगेगा, टॉक नहीं लगेगा और टू यू हो जाएगा. राइट. ओके, नेक्स्ट. विच चैनल्स आर यू फॉलोइंग? विच channels are you following? Nowadays people do not follow any TV channels. People follow YouTube channels. तो बताने की जरूरत नहीं है which YouTube channels are you following. If you want to be more specific, you can say which channels are you facing, right? Otherwise, which YouTube channels are you facing? Otherwise, you can following. Otherwise, in simple terms, you can say which channels are you following. Simple thing. अच्छा, मैं बहुत आदती हूँ. मुझे बहुत आदत है पॉडकास्ट सुनने की. मतलब मुझे आदत है पॉडकास्ट सुनने की. तो बोलेंगे आई एम यूज्ड टू. अभी भी हूँ. I am used to. Now remember, I am used to listening to podcast. बस. चैनल लगाने की जरूरत नहीं है. हम चैनल नहीं, हम वो पॉडकास्ट ही सुनते हैं. ठीक. I am used to listening. Always remember, ये is MR plus used to plus ing means current habit, present habit, right? लेकिन मैं पहले YouTube चैनल देखती थी, फॉलो करती थी. अब पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ. आई यूज्ड टू फॉलो. I used to follow. एम का डिफरेंस है. कोई बताएगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही. किसी को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि आई यूज टू प्रेजेंट में लेके चलते हैं. राइट. बट यू डोंट हैव टू डू दिस. यूज टू मीन्स पास्ट टेंस. करता था, वो करता था हिंदी मीन्स Used to means the past habits, some past habits. एग्जैक्टली. और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करता था मीन्स यूज टू. सिंपल. it has Hindi meaning translation also. I used to follow some YouTube करता था channel. और लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ शायद. नहीं, अब अब नहीं कर रहा हूं, तभी तो बोल रहे हैं करता था. हाँ, अब करता नहीं था कर अब नहीं रहा कर हूँ. रहा हूँ तो हाँ, राइट. some there YouTube we channels. use used. राइट ना. some YouTube channels. क्या प्रॉब्लम है? अच्छा. ठीक. अब नहीं करता हूँ मीन्स ये मेरी पास्ट हैबिट है, मेरी प्रेजेंट हैबिट नहीं है. तो देखो, वो एम और एम का फर्क है. दूसरा, जब आप प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हो तो टू के बाद आप आईएनजी लगाते हो, जो भी आपका एक्शन है. लेकिन यहाँ पर आपने फॉलोइंग नहीं बोला, आपने फॉलो ही बोला. दैट इज ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड. ठीक है. आ जाएगा धीरे धीरे. व्हेन यू यूज यू विल अंडरस्टैंड. ओके, डोंट वरी. हाँ. जब किसी से बात करते हैं तो उसकी पहले लाइक्स डिसलाइक्स जान लो. ओके. आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल. ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कोई स्पेशल चीज के बारे में बात कर रही हूँ. बट इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, यू शुड आस्क दैट पर्सन. राइट. उससे पूछ लो कि आपको ये पसंद है कि नहीं, फिर उसके बारे में आगे बात करो. वो इसलिए सो दैट द पर्सन विल ऑल्सो इन्वॉल्व विद यू. अगर आप उसके हिसाब से बात नहीं करोगे तो आप बोलते जाओगे, बट वो नहीं बोल पाएगा. तो इट विल बी अ monotonous conversation, one-sided conversation, right? We don't have to develop that. तो हमें एक दूसरों को पहले पूछना है. और ये चीज किसी को भी फॉलो करना है, फॉर द स्पीकर वन एंड फॉर सेकेंड ऑल्सो.
both of you have to follow it. पूछ लो पहले. So are you interested in, पूछने का तरीका है are you interested in, उसके बाद कुछ भी पूछ सकते हैं. Are you interested in music? Are you interested in dance, traveling, or numerology? पूछ लो. Anything. Next. मैंने अपना स्क्रीन टाइम बना लिया है. I have set a screen time for me. If you are a mother, then you can say for my children. जैसे my husband made my screen time. What I do, Saturdays, generally what I do, if I am very much involved in watching something, anything, any video, anything, if I am listening to Premanand Maharaj, anybody, Sadhguru, anybody, it's not about scrolling the reels only, that I do little, but yeah, I keep listening to these people. So when I do it too much, so my husband says after 11:30 or 11:15, he says, I'm keeping my mobile aside. I'm sleeping now. That's an alarm for me to keep the mobile aside too. Are you getting? Or if he doesn't do this, like on Saturdays, he doesn't do it because he knows that next day I don't have to go anywhere. He doesn't have to go anywhere. We are at home only. So what he does, he doesn't say anything. You won't believe that day. I generally Saturdays, like I spend around 2 to 3 hours watching all these things, pending things. What I did not watch, I kept in the draft or saved. Then I watch, and sometimes I sleep by 2 and 3 o'clock also. That's the problem, right? It's kind of addiction only ना. तो वो एक स्क्रीन टाइम हमने सेट कर लिया है या बच्चों के लिए कर दिया है, राइट? यू शुड से दिस. नेक्स्ट. मैं ज्यादा इंटरेस्टेड, आई एम मच इंटरेस्टेड इन, जस्ट अंडरस्टैंड वन वर्ड. आई एम मच इंटरेस्टेड इन. इट मीन्स मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में हूं. Yeah, I'm interested in music, but I'm much interested in classical music or listening to classical music. Or I'm much interested in traveling, right? I'm not interested, or I'm interested in movies, watching movies, but I am much interested in traveling, visiting new places. So you can somewhere differentiate what you like and what you like more, or much more than that. Okay. Next one. It is helpful for me. किसी कोई बात पे सेंटेंस आया था. It is helpful for me. Next. हाँ, क्या आया था बताती हूँ. It is helpful for me, or it is helpful of me. For me or of me, right? For me or of me. तो यहां पर of me is wrong, for me is right. It is helpful for me. Next. I agree with you. जब बोल रहा हूं हाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, I agree with you. हम छोटे छोटे सेंटेंसेस कम यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई. हाँ, आपका स्क्रीन टाइम क्या है? व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम? राइट. अच्छा. टू बिफोर 2 months या फिर 2 months ago. एक साथ नहीं बोलते हैं. डोंट से बिफोर 2 months ago. वाई टू यूज इट? मैं नहीं जा पाई. आई कुड नॉट गो देयर.
I couldn't और could not go there. मैं नहीं कर पाई. I could not और couldn't do that. मैं नहीं खरीद पाई. I couldn't buy. जब कुछ नहीं हो पाता है तो could not, कुछ हो पाता है तो could. I could go there. मैं वहां जा पाई. Right? Next. What is your favorite junk food? It's okay. मैं अपने बच्चे से कहती हूँ. I tell my child. हमेशा बोलती हूँ मतलब I tell. I always लगा दो साथ में. Tell my child. Right? मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ that. उसके बाद जो भी सेंटेंस है you can simply say I always tell my child. Right? हाँ. कभी कभी हम आइडियाज दे सकते हैं. यू कैन ट्राई होममेड पिज्जा. पिज्जा. Ma'am, complete some. I always that my child that avoid junk food. हाँ, अवॉइड जंक. यू कैन ट्राई होममेड पिज्जा. पिज्जा. पिज्जा का साउंड पिज्जा नहीं होता है. PIZZA नहीं होता है. इट इज. इट इज ऑलवेज द साउंड इज लिटिल टी का साउंड है. एक ज है और एक टी है. छोटा टी है. स्मॉल टी है. पिज्जा. पिज्जा. छोटा टी का साउंड है. तो पिज्जा ना कह के उसको बोलेंगे पिज्जा. पिज्जा. छोटा सा टी साउंड भी लेकर आइए. जो पहला वाला जेड है ना, वहां पे वो जी साउंड जो है वो ट साउंड है. पिज्जा. आई लाइक पिज्जा. सिंपल. ओके. I'm कोई asking one question. कल का जैसे सपोज हम लोग कि कल का प्लान बनाओ, तो कल का प्लान बनाओ मैट आएगा ना मैम इसके लिए भी? नहीं, मेक क्यों आएगा? मेक आएगा. कल का बनाओ पास्ट फ्यूचर टेंस है ना. अच्छा मैट. मेक. मेक. अच्छा मेक. अच्छा सॉरी सॉरी हाँ. मैम. अच्छा मेक. ओके मैम. मेक प्लान फॉर टुमारो. चलो कल के लिए प्लान बनाते हैं. जब सब मिलके बना रहे हैं तो लेट्स मेक प्लान फॉर टुमारो. लेट्स प्लान फॉर टुमारो भी सही है. आजकल क्या हुआ है, मेक प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान भी यूज होता है वर्ब की तरह. लेट्स प्लान फॉर टुमारो. ऑल आर ओके. पहले वाला है कल बना लो, आप बना लो, है ना. मेक प्लान फॉर टुमारो. प्लान फॉर टुमारो. लेकिन मिलके बनाते हैं तो लेट्स प्लान. लेट मतलब लेट अस. हम सब मिलके बनाते हैं. इट्स अनहेल्दी. आई नो. I know it is or it's unhealthy. But I eat, I occasionally eat it. I occasionally eat it. Occasionally मतलब sometimes. मैंने पहले कभी उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, लेकिन अब मैं करती हूँ. तो यहाँ पे आ जाएगा I never took participation in those activities. But I do now. पर मैं अब करती हूँ. दर्शना was saying. क्या कोई नेटवर्क इशू है? Any network issue? Is there any network issue? Because ठीक है, जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो any network issue is good. When we don't know each other, we are in formal situation, attending a Zoom or attending a any meeting like Microsoft Team or something. Is there any network issue? अच्छे से पूछो.
देखो कुछ नहीं जाता है, बट वर्ड्स हैं, राइट? So these are the things which I got from your speaking, guys. कुछ हरे लाल दिख रहे होंगे, वो अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश वाला प्रॉब्लम है, कंप्यूटर का सिस्टम प्रॉब्लम है. इट्स ओके, लीव दैट. So the sentences you understood, they are the same, right? I would like to just have a very quick glance at it. Never start sentence with myself. Always say I myself, not say myself cooked the dinner. No, I myself. Myself से sentence शुरू होता ही नहीं है. Past tense, whenever you're talking about past habit or routine, you always use second form. um, when your exams are going on, it should be exams are going on, students are facing or taking their exams. Oh gosh, oh gosh, oh my god is very old version. Now we should say oh gosh, भगवान के पास वैसे ही बहुत सारे काम है, उन्हें क्यों परेशान करना बात बात पे. So say oh gosh, you have got a hectic schedule, right? Go for a walk. I go for a walk daily, so do I. तो सामने वाला भी बोल सकता है, मैं भी. I am exhausted or I'm very tired, so am I, right? Full sentence है ये. I study for 2 to 3 hours, so do I, right? Or I'm extremely happy to meet you. I'm extremely, I'm very happy to meet you. I'm pleased to meet you. I'm glad to meet you, so am I, right? Are you a government teacher or a private teacher? Question का question ही बनाएंगे, right? I am only the one who is not in private job, right? मैं अकेला ही private job में, बाकी सब government job में. I'm the only child of my parents. I'm elder, I'm eldest, I'm younger, I'm youngest, I'm median, right? Like I am eldest. Is the company okay? Is the company fine? इसका मतलब वो है, the company बीमार नहीं हुई है, अच्छी है बुरी है, ये पूछ रहे हैं. Is the company good? ये भी बोल सकते हैं. I have an interview. I gave an interview in a pharma company. तो gave मतलब दिया, ठीक? After 1 o'clock, after 1 p.m., after 1, I am free. They are preparing for competitive exam. Do you give time to your subjects too? मतलब इंग्लिश तो ठीक है, मैथ तो ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को, आपके जो सब्जेक्ट है उनको टाइम देते हो? Present time, I am not working. Present times, avoid saying that. Are, honest, honor, and honor. I pray to God that you would be selected. I wish you would get this job. So I'm wishing to God. I wish you would score well, or you would pass the exam with a good score. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. हम कोई आपको बोलता है ना कि कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है, आपको पानी चाहिए, उसने आपको वो ग्लास ऑफ वाटर पास कर दिया. यू वांट सॉल्ट ऑन द टेबल, समबडी पासेस द सॉल्ट टू यू, और कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें बोलते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर. ऐसी चीजों को जब कोई आपके लिए करता है तो उसे जेस्चर कहा जाता है. थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर, राइट? लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ अच्छे वर्ड बोले आपकी तारीफ में, आपकी भलाई में, तो फिर आप उसे वर्ड्स बोलेंगे. कुछ कर दिया है तो जेस्चर बोलेंगे. डू यू हैव किड्स? 1.5 years. One of my friends, not one of my friends, she goes to Anganwadi. I wish you would solve my problem. I don't face any problem with other subjects. 1 year, but 2 years, 3 years. Come what may, चाहे कुछ भी हो जाए, I would learn English. It's been a great time talking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टाइम समय है जब मैंने आपसे बात की. Which channels are you following? I am used to listening podcasts. लिसनिंग टू पॉडकास्ट. मैं मतलब बहुत ज्यादा आदती हूँ या मैं सुनती हूँ पॉडकास्ट. आई यूज टू फॉलो सम यूट्यूब चैनल्स. मैं सुना करती थी. आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, डांस, ट्रैवलिंग, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, वॉट एवर? आई एम set I have set a screen time for me, for my children. I am much interested in music or dance or some other thing. इट इज हेल्पफुल फॉर मी. मेरे लिए बहुत फायदेमंद है ये. बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं, हेल्पफुल इज मोर कॉमन.
ऑफ मी नहीं होता, फॉर मी होता है. I agree with you. What is your screen time before 2 months or 2 months ago? Right? एक साथ में before और ago नहीं लगेंगे. Simple. Past tense के लिए लग रहे हैं. I could not go there. जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाए तो could not, कुछ कर पाए तो could. ये past tense है. कर सकते हैं तो can लगता है. Can का past could होता है. I can dance. मैं डांस कर सकती हूँ. और मैं नहीं कर पाई उस दिन. I could not dance that day. I could not dance on my friend Sangeet, something like that, right? I always tell my child, मैं हमेशा अपने बच्चे से बोलती हूँ that make your timetable or avoid eating junk food. Okay? You can try homemade pizza, pizza, pizza. T का छोटा sound है. Second Z is Z. But the first Z is T, छोटा सा T, pizza. Pizza अलग से नहीं बोलेंगे, of course. Don't say pizza also, which is, of course, मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा आप में से. Make plan for tomorrow. कल के लिए बना लो प्लान. चलो कल के लिए बना लेते हैं. Let's plan for tomorrow. Let's plan for tomorrow. Let's make plan for tomorrow. I know it's unhealthy. मुझे पता है unhealthy है, but I occasionally eat it. कभी कभी खाती हूँ. I never took participation in those activities. पहले तो नहीं लिया था. वहां पे took मतलब है नहीं किया था. In past. अभी करती हूँ. अभी करती हूँ मतलब I do now. Is there any network issue? क्या network issue है? Right? When you read these sentences, guys, you will realize that these sentences are the part of very, very important speaking. छोटे छोटे sentences हैं, but very useful, right? कल when I heard you, तो मुझे लगा कि ये जो sentence या तो आप बोल नहीं पाए, or you spoke them half, or maybe you tried but they did not come. तो या तो यूज ही नहीं किए, या फिर आप करना चाहते थे तो हाफ किया, या फिर वो मिस्टेक कुछ गड़बड़ की उसमें बोलने में. तो ये वो सेंटेंसेस हैं. डू यू हैव एनी डाउट हियर गाइस? No, ma'am. No, ma'am. Good. Nice. Okay. So okay, it's already 9:16 now. I told you to have a short class today. वैसे भी टाइम हो गया है वैसे हमारा, तो मैं जल्दी से क्विकली फिनिश कर देती हूँ क्लास को. बाकी चीजें हम कर लेंगे, अब मंडे को करेंगे जो भी करना है. तो मैं आई एम गिविंग यू वन टास्क. दैट टास्क yesterday only I gave in yesterday's class also. Still I am just recalling it, that you guys have to prepare questions to ask somebody. और वो क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, जो आप किसी से पूछना चाहते हैं व्हेन यू मीट समबडी फर्स्ट टाइम, और यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन लिटिल बिट बट यू वांट टू नो मोर अबाउट द पर्सन. अब उन क्वेश्चंस को वही व्हाट इज योर नेम, वो जरूरत नहीं है. यू नो दैट एंड यू नो द नेम ऑल्सो ऑफ दैट पर्सन. व्हाट इज योर जॉब, ये हो सकता है. व्हाट इज योर बिजनेस, आर यू अ बिजनेसमैन, यस, व्हाट इज योर बिजनेस. What do you like, how do you improve your English, do you read any book, what kind of books do you read, do you follow any YouTube channel, what kind of YouTube channel do you follow. Such sentences I want you to make. At least कितने बनाने, तो one person can make at least 15 questions, minimum 10, maximum 15, right? I will share the question words with you. What, where के अलावा भी I'll share the words. I will share their Hindi meanings also. What you are supposed to do is you need to read the word. आपको लगता है कि इनसे कोई sentence I can frame, please make them. If you think I am asking this question but you are not able to make in English, आप उसे वहीं पर ही हिंदी में लिख लीजिए and ask me on Monday. मुझसे पूछ लीजिए मंडे को द सेम हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश. जो भी बोलना चाहते हैं और वो नहीं आ रहा है, उसी वक्त लिख लीजिए देन एंड देयर एट द सेम नंबर, वही लिख लीजिए. ओके, सो मिनिमम 10, मैक्सिमम 15, एटलीस्ट 10 तो होने ही चाहिए. ओके, या दर्शना, एनी क्वेश्चन?
Ma'am, I joined the class late, so today in the class we have done only that correction. Yes, we have done only corrections. Okay, ma'am. They were quite lengthy, so I think we took this time. No problem. चलो, तो फिर मिलते हैं on Monday, right? First, we will be discussing on your doubts, or if you need any translation for me, and then we'll have the kind of grammar learning. उसके बाद हम फिर ये वाला questionnaire करेंगे. जब हम क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर कॉन्वर्जेशन होता है, तो उसे कहते हैं क्वेश्चनायर. इट कैन ऑल्सो बी रैपिड फायर क्वेश्चनायर और रैपिड फायर, कुछ भी हो सकता है, राइट? चलो, okay guys, see you on Monday. Enjoy your Sunday. There is no class on Sunday, so happy Sunday. Bye bye, take care. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Take care. Bye bye. Good night. Thank you. Happy weekend, ma'am. Same to you. Thank you.